Bismillahirrahmanirrahim. Fundamentals of the metal casting. This is our new topic of the week 3. So, overview of the casting technology. These are the topic which we will cover today: heating and pouring of the molten metal, and solidification and cooling. So, casting process, as you have already saw this process during your workshop technology course in the second semester, and the course was done. This lab was done at the main campus. So what are the solidification processes? In solidification process, the work material start is a liquid that is heated in a furnace or is a highly plastic addition, and then a part is created through the solidification of the molten metal. Solidification process can be classified according to the engineering material that have been processed. So engineering materials are metals, ceramics, polymers, and polymer matrix composites. These materials have been discussed in our earlier lecture also. Okay, this is an overview of the solidification processes. Just like solidification process involve castings of metals, glass working, processing of polymers and PMCs. Then casting of metals involve expandable mold casting and permanent mold casting. Expandable castings are those in which the mold will be break or sacrificed by the end of the casting, whereas permanent casting, the mold will not be breaked by the end of the casting. So expandable mold casting involves sand casting. This type of process you perform in the main campus during your workshop technology course. Then there is a few processing of polymers and PMCs. So these are the four processes that are involved in the processing of the polymers. So casting is a process in which molten metal is flowed by the gravity or any force into the mold. Mold is the shape of the cavity of which the product you product for cavity of the product shape you require. In the mold cavity, the metal metal solidifies and it takes the shape of the mold cavity. The term casting is also known as the part or a product that has been made during the process. First of all, the metal should be melted in the furnace. Then molten metal should be poured into the mold with the help of some ladle or any other means. By the end, we let the molten metal to freeze, to solidify. Casting can create complex part geometries. Further, it can create both internal and external shapes. Some casting processes are net shape. Net shape means in some casting of process we get uh, the shape that is fully finalized, while there are some other casting processes in which we get the shape that are near to the finish to the final shape in which further machining is required. Casting can produce smaller as well as larger parts. Some casting processes are suited to the mass production. However, there are a few disadvantages of the casting process, such as limitation on the mechanical properties that, as compared to the cold working processes, the mechanical properties are now too much improved in the casting process. The casting, if the sand is not too much purified, sand is not too much clean, then the product or the casting we get has a poor dimensional accuracy and poor surface finish. Okay, especially in case of sand casting, the product haven't any good surface finish. Along with that, there is a lot of safety hazards involved to the workers. Safety hazards means that a lot of heat is involved in this process, and the molten metal can bring damage to the workers. Further, environmental problem also exists. Just like you, in some of the process, we will burn a lot of gases or you can say coal, so that create environmental problem. From a sustainability point of view, the casting process is not environment friendly. Some of the casting processes.
Parts made by casting, big parts such as engine blocks, head for automotive vehicles, wood burning stove. These are the example of the parts that are made from the casting. There are a few smaller parts, just like dental crowns. Dental crowns means the casing of or the covering of the teeth, jewelry, small statues, and frying pans. These are the example of the casting processes, and a large variety of ferrous and non-ferrous parts can be made. Ferrous parts are those that are steel iron based, just like steels, cast iron, and non-ferrous are those just like in which there is no inclusion of the iron or ferrous, just like you can say gold, zinc, aluminium. These are the few example of non-ferrous. Okay, overview of the casting. Foundry is a place where casting is performed. Factory equipped for making molds, molding from the sand or from the any other material, just like ceramics. Metal melting of the solidified scrap pieces of the metals, then handling of the molten metal from the furnace to the mold, performing the casting process means solidification of let the molten metal to be solidify, breaking of the mold, then cleaning and finishing the casting. The workers who perform casting operation are known as foundrymen. Just like in the case, the worker who perform welding are known as welders. Same is the case, the worker who perform casting operation are known as foundrymen. The mold in the casting. What is mold in the casting? Mold is a sand-based sand-based, you can say, or any other material based, is a part that contains a cavity. The cavity is formed with the help of the pattern, and after removal of the pattern, the cavity that is formed is more or less same to the geometry of the part that we need. However, the size of the cavity may be slightly larger than the original part. That also due to the involvement of few you can say factors, just like shrinkage allowance, machining allowance. So for that allowances, the size of the casting is kept little slightly higher than the final size. Actual size and shape of the cavity must be slightly oversized, as I've explained that the size is slightly oversized because of shrinkage allowance, machining allowance, draft allowance, okay, and to allow for the shrinkage of the molten metal during the solidification and cooling. Okay, the shrinkage is performed during the solidification process when the latent heat of fusion is given off, and all after that, during the final cooling, further heat is given off and further shrinkage of the part occurs. Molds, molds are made up of a variety of the material, including sand, plaster of Paris, ceramics, and metals. However, the molds of metal and ceramics, these are permanent molds. Okay, there are two types of mold, you can say. One is open mold and the other one is closed mold. In the open mold, you can simply easily pour the molten metal into the mold cavity where it solidifies, and upon the solidification, we take out the casting, or we take out casting or solidify part from the mold. This is the figure A on your left hand side. It shows the open mold process. Okay. However, the figure on your right hand side, it shows a closed mold process. It is used for the complex geometries and require a gating system. So what is gating system? Gating system or passageway is such a system that took the molten metal from the start and take the molten metal into the cavity. Okay, so this is the gating system involves pouring cup. Okay, one technical thing you should have to keep in mind for as an engineer point of view, that you should have to design the pouring cup, down screw, runner in such a way that splashing of the metal is minimized. Splashing of the metal means जो मेटल की छींटे होती हैं, जो लिक्विड
अगर आपने देखा हो तो एक लैमिनार फ्लो होता है और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है. सो यू शुड हैव टू डिजाइन द गेटिंग सिस्टम इन सच अ वे दैट द फ्लो थ्रू द गेटिंग सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड एट द लैमिनार फ्लो. ओके, आपने गेटिंग सिस्टम इस तरह डिजाइन करना है कि जब आप मोल्टन मेटल को पोर करोगे तो मोल्टन मेटल का फ्लो लैमिनार रहे. ठीक है, अगर लैमिनार नहीं होगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, देन इसमें जो सैंड है, इस सैंड की सारी इरोजन हो जाएगी. जो स्प्लैशेस होंगे, जो छींटे होंगी, जो मेटल उस टाइम उसका टर्बुलेंट फ्लो होगा, वो इसकी जो मोल्ड की सर्फेसेस हैं उनको वो डिस्टर्ब करेगा. वहाँ से रेत मोल्टन मेटल में मिल जाएगी और वही मोल्टन मेटल में सैंड मिक्स हो जाती है. वो कैविटी में जब मोल्टन मेटल जाती है, सारी की सारी कास्टिंग या पार्ट को ख़राब कर देती है. इज दैट क्लियर टिल देयर? यस सर। Okay, good. So what should we have to do is designing of the passageway or getting system in such a way that flow should be to maintain the flow. Laminar, sir. Laminar, Laminar. laminar flow. Okay, then it comes toward the riser. What is the purpose of the riser? Anyone know, as you have performed the workshops earlier in the workshop technology have performed this? What is the purpose of the riser? You know that? सर सर ये गैसेस को राइजर, बाहर निकालता है। No. The purpose राइजर of सर मेटल को स्टोर करता है ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस. ओके, as during the solidification process the metal solidifies in the cavity. As the metal solidifies, the volume of the metal shrinkages. Okay, it means इसका मतलब ये है बेटा कि इन स्टार्ट लिक्विड मेटल ने इस कैविटी को सारे को फिल अप कर लिया. अब जब श्रिंकेज होगी, सॉलिडिफाई होगी मेटल, तो उसकी श्रिंकेज होगी. श्रिंकेज की वजह से क्या है जी, पहले तो मोल्टन मेटल ने सारा सॉलिड इसको फिल अप कर लिया था, अब यहाँ जगह खाली हो रही है. तो जो जो जगह खाली होती जाएगी उस जगह को फिल अप करने के लिए राइजर से मोल्टन मेटल सप्लाई हो रही होती है. सो पर्पज ऑफ द राइजर इज टू सप्लाई द मोल्टन मेटल while the shrinkage of the metal casting occurs in the cavity. Okay, so हमें लेवल लेवल भी बताते हैं सर कि फुल हुआ या नहीं. okay, in that yeah, your point is valid, very good. Riser tells you the level of the molten metal in case when the riser is open. There are two types of riser. One is called closed riser and one is called open riser. The riser that one is shown in the figure is closed riser. In that case, we hammered. The riser doesn't give us information about the filling of the metal of the hole in the hole cavities. However, what you are talking about is open riser. The open riser give us information about filling of the whole cavities inside. Okay. So purpose of the riser is to provide the molten metal during the shrinkage process. Okay, during the solidification process, it compensates. Okay. So a few things I will explain in this. The whole there's a flask, you can see, in which we fill up the sand. This flask is sometimes single in the single piece on the left hand side, or this can be in the two pieces or three pieces. Whenever the flask is in two pieces, the top portion is known as cope, COPE, and the bottom portion is known as drag. In between the two there is a parting line. Okay, metal is initially poured through the pouring cup. Purpose is again to maintain the laminar flow. Then the metal comes through down screw into the runner, and runner guides the metal to supplies the metal to the cavity. Okay. For the hollow shape, we place a core in the molten metal. अगर हमें कोई खाली शेप चाहिए, जस्ट लाइक आप अपने ज़हन में कोई भी पार्ट कंसिडर कर लो जिसके दरमियान कोई होल है, तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं. या तो आप बाद में मशीनिंग करके वो होल क्रिएट करो जिसमें मेटल रिमूव होगी. ये दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप उसको मशीनिंग से बचाने के लिए, कि मशीनिंग आप इतनी ज़्यादा करेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी. स्टार्ट में आप एक येलो कलर का जो आपको पीस नज़र आ रहा है, आप सैंड का पीस रख देते हो. सैंड के पीस के इर्द गिर्द सारी मोल्टन मेटल जमा हो जाती है. जब आप इस पार्ट को निकालते हैं तो इस पार्ट से आप इस सैंड को सिर्फ आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक होल या इधर एक कैविटी बन जाएगी. उस कैविटी को आप हल्का सा मशीन करेंगे, आपके पास फाइनल शेप आ जाएगी.
सो इन शॉर्ट कि जब हमें हॉलो कैविटीज चाहिए होती हैं तो हम जो भी मोल्ड होता है उसके अंदर एक कोर रख देते हैं और कोर के इर्द गिर्द मोल्टन मेटल सारी सॉलिडिफाई हो जाती है और जब मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होती है हम कोर को रिमूव कर लेते हैं. टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. जी एनीवन प्लीज क्वेश्चन. सर अगर अगर जो सैंड है, सैंड उसको हम अगर सही से प्रेस ना करें तो फिर क्या होगा? ओके सैंड को प्रेस करने दो चीज़ें होती हैं बेटा. सैंड को आप प्रेस भी करते हैं प्लस सैंड के प्रेस करने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको भी इंजेक्ट करते हैं ताकि जो मोल्ड है वो बहुत हार्ड हो जाए. उसके बाद उसको बेक भी करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए. इन केस आपका जो क्वेश्चन अगर हम उसको हार्ड नहीं करेंगे, हार्ड करने का मतलब है अगर हम उसको प्रेस नहीं करेंगे तो सैंड है उसकी स्ट्रेंथ जो है ना मोल्ड की इतनी ज़्यादा नहीं होगी. क्योंकि जब मोल्टन मेटल को प्लेस किया जा मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है तो मोल्ड ठंडा होता है और जो एज कम्पेयर टू द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल तो उस दौरान बहुत ज़्यादा फोर्सेज अप्लाई होती हैं. तो अगर मोल्ड की स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मोल्ड टूट जाएगा. ठीक है. यस. हमें कुछ चाहिए होती हैं प्रॉपर्टीज वो मैं आपको बता देता हूँ सैंड की. एक ये है कि सैंड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए. दूसरा सैंड को रीयूजेबिलिटी कि आप सैंड को बार बार मोल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहो. उसकी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि जब मोल्टन मेटल को पोर करोगे तो सैंड ऐसी हो कि उसके दरमियान से गैसेस इवॉल्व हो सकें. पोरेसिटी. नहीं नहीं पोरेसिटी का ये पोरेसिटी का मतलब ये है वो एक डिफेक्ट है बेटा. पोरेसिटी ये होता है कि गैसेस नहीं निकलती जब मोल्ड में से तो गैसेस जो हैं वो मोल्टन मेटल के अंदर मिक्स हो जाती हैं और जब मेटल सॉलिडिफाई होती है तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं. अगर आपने बंटे खेले हो बचपन में आपको याद हो कि बचपन बंटों के अंदर छोटे छोटे से वो होल्स होते हैं. सेम इज द उसको पोरेसिटी बोलते हैं. ठीक है. सेम इज द केस मेटल के अंदर भी इस तरह पोरेसिटी आ जाती है. तो मेटल की पोरेसिटी को कम करने के लिए सैंड है उसके अंदर ये कि वो परमिएबल हो, उसमें से गैसेस इवॉल्व हो सके. ठीक है. यस सर, क्लियर. एनी अदर क्वेश्चन? सर ये कोप किस मटेरियल का होता है सर? ये हम होल कोप बनाने के ओके लिए रखते हैं सर। कोप और जो ड्रैग है ना कोप की बात कर रहे हैं ना COPE कोर की. जी सर, जी सर। सर वो जो होल के लिए रखते हैं वो मटेरियल उसे में कोर सर, कहते हैं. आपने कहा था कोर कि मशीन। कोर CORE सर, उसे कोर। कोर कहते हैं. हाँ वो बेसिकली सैंड का ही बनता है. ठीक है. सैंड का बनता है ताकि ये बस वो सर। सैंड उसके इर्द गिर्द जमा हो जाए और वो टूट जाए. ठीक है. So सही है सर। expandable mold process use an expandable mold वो जिसको हम destroy कर देते हैं. By the end of the process and we remove the casting. Casting means the final product. Mold materials are sand, plaster of Paris, and similar material, and binders added in sand and plaster of Paris to make it bind the sand particles to hold them to provide them then strength. Permanent mold processes are those that use a permanent mold which can be used numerous times in order to make the casting. Okay. The permanent mold can be made up from a metal or ceramics or any refractory material. Okay, refractory material is those that can withstand to the high temperatures. Advantages: many eradicate means complex geometries can be possible with the expandable mold process. Part shapes in the permanent mold are limited, or further the permanent mold processes are more economical in the high production. Economical means they cost less in the mass production. Okay, because you can produce a lot. Okay, few of the sand casting process, how you will do the sand casting. So I'm going to explain. This is first of all, this is a पार्ट यू वाना प्रिपेयर. ये जो पार्ट है जहाँ मेरा एरो इस टाइम मूव कर रहा है सिर्फ ये वाला छोटा सा पार्ट है. आपने ये प्रिपेयर करना है. ठीक है. इस पार्ट को आपने किसी भी स्टील या लकड़ी के पीस के ऊपर रख दिया और या इसके ऊपर आपने फ्लास्क यू कैन से आप इसके ऊपर फ्लास्क रख दोगे. फ्लास्क रखने के बाद आपने इस सारे पीस को आप प्लीज अपने सारे के सारे जो माइक्स है उसको ऑफ कर दो आप लोग स्टूडेंट्स. All students are advised to turn off their mics, please.
Don't make interference in the lecture. Please turn off your mics. So Afnan, you should be removed from this meeting. I removed Afnan. Now whose mic is on? Okay, fine. Okay, sand casting processes. You will then fill up the cope with the. Okay, then you will fill up the cope, the upper portion of the flask with the sand. Then you will place other half of the pattern flask over the second pattern. This is the flask. Then you will fill up the flask again with the sand. After that, you will remove both of the sand cast and both of the parts of pattern. You will get a cavity. The cavity is then filled with the molten metal. Let the molten metal be solidified, and by the end you will get a solidified casting process part. So again, this is a figure. और ये जो सुलेमान, I think आपने क्वेश्चन पूछा था. I don't know, आपने किसी ने कोर के बारे जी में, सर, ये जी कोर ये ही सैंड का बना होता है, ठीक है. जहाँ भी अच्छा एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ. ये आप लोग मुझे इसका जिसको आंसर आता हो आप बेशक टाइम लेके बता दो. रियली सॉरी. गेटिंग सिस्टम एक चैनल है